present and future values of annuity due. An annuity due is also an annuity, but it is a little different from an ordinary annuity. As we have discussed that in an ordinary annuity, the payments or receipts are at the end of the period, whereas in annuity due, the payments or receipts are at the beginning or at the start of a period. We have also discussed it that an annuity does not necessarily mean annual payments or receipts. यानी annuity नाम तो annual से है, लेकिन ये मुमकिन है कि ये पेमेंट्स क्वार्टरली हों, मंथली हों या वीकली हों. उसको भी हम annuity का नाम ही देते हैं. ऐसी एन्युटी जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स साल या महीने के शुरू में पे की जा रही हों, उसको हम एन्युटी ड्यू का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन रिसीव्स हिज पेंशन at the start of every month, then it is an annuity due. Similarly, if a person pays his rent at the start of the month, it is also an annuity due. We have a formula that is basically converted from the ordinary annuities formula to calculate the future value of annuity due. Similarly, we also have a formula for the present value of annuity due. Now let's have a look at the formula of future value of annuity due and let's try to understand it. The formula is that installment multiplied by 1 plus r raised to the power n minus 1 over r, and this is the future value interest factor of an ordinary annuity. Now if we have a look at this formula, we see that this is multiplied by another factor which is 1 plus r to get the future value of annuity due. हम ऐसा क्यों करते हैं? जब हम ये फॉर्मूला यहाँ तक अप्लाई करते हैं तो हम दरअसल ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं, और हम अगर कंपेयर करें एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी को तो हम देख सकते हैं कि एन्युटी ड्यू में क्योंकि पेमेंट्स और रिसीट्स स्टार्ट में होती हैं, इसलिए हर पेमेंट और रिसीट एक साल या एक पीरियड के लिए ज़्यादा कंपाउंड होती है. In other words, we get 1 year or 1 period's more interest on every installment. To incorporate that factor, we multiply the whole formula with 1 plus r, and this is the logic why we have this formula for annuity due. And again, in this formula, FV stands for the future value of annuity due, R is the amount of installments, small r is the rate of interest, and n again is the number of installments. As we have just discussed, like the future value, we can also transform the present value formula of ordinary annuity for annuity due. As I've just mentioned that the difference between the two annuities is the time at which the payments are made. Now, let's see what are the variations that we need to make and what is the formula for the present value of annuity due. If we have a look at this formula, we see that instead of having the number of installments as n, we have taken minus n plus 1, which means that if we add positive 1 in a negative value, that will reduce that value by 1. यानी अगर n जो है वो 10 होगा तो minus 10 में अगर 1 प्लस करेंगे तो n की वैल्यू 1 कम हो जाएगी. हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि एन्युटी ड्यू में जो पहली इंस्टॉलमेंट है, जो पहली पेमेंट है, वो 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर. So the value which is already there at the 0 point or at the beginning of the first year needs not to be discounted any further. And as a result, we reduce from the formula the number of installments by 1. Then what to do with that one installment, the first installment that we did not consider?
what we do is that we add that installment as it is in the answer that we get. So the formula is again the same. If I say it is the same formula, why would I say this? Because minus n plus 1 is also a number. That is, अगर n 10 होगा तो minus 10 plus 1 9 होगा, जो कि एक नंबर ही है. इसीलिए हम इसी फॉर्मूले यानी ऑर्डिनरी एनिटी के फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करते हैं. और अगर हम इस फॉर्मूले का एनालिसिस करें तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू PV एनिटी ड्यू के लिए यूज़ होगी, और R अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, स्मॉल r रेट ऑफ इंटरेस्ट, and n is the number of installments. And I would like to repeat it here that n is not the number of years. इसकी वजह मैंने पहले भी बयान की, मैं दोबारा उसको बयान करना चाहूँगा, क्योंकि कई मर्तबा ये इंस्टॉलमेंट्स मंथली या क्वार्टरली भी होती हैं. तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास एनुअल दिया हुआ है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. ये एडजस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत होती है. यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है और इंस्टॉलमेंट्स भी एनुअल है, फिर हम इस फॉर्मूले को बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें एनुअल दिया गया है और हमारी इंस्टॉलमेंट्स मंथली या क्वार्टरली या वीकली हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्ट करना होगा, ताकि हम अपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकें.